NU CFDC to facilitate priority sector loan transactions and tape upgrades for UCBs. Okay, so it is an umbrella organization for urban cooperative banks. What is the full form of NUFCFDC? I find in this point only this one is very important. National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited. Okay, and as they are discussing about priority sector lending, it is little important because PSL is always the government's focus, and whatever the government's focus is, the question maker finds question out of it, right? So NUFDC formed to boost cooperation among urban cooperative banks and to facilitate buying and selling of priority sector loans within the UCB, because like RRB, like SFB, Small Finance Bank, okay, the urban cooperative bank PSL target is going to be 75% of their adjusted net bank credit. Okay, so this organization is now set for their PSL target achievement. Okay, the initiative ensures that the sector's funds stay within, allowing larger UCBs to support the smaller ones with services like demat and foreign exchange. Okay, and it also works as a self-regulatory organization, SRO, for UCBs. Like you have AMFI for mutual funds, okay, like you have FIMDA for foreign exchange management, foreign exchange transaction organizations, FIMDA. So similarly, SRO is a self-regulatory organization which will regulate themselves with this RBI's approval. ठीक है? RBI updates DCB list. SBI, HDFC, and ICICI Bank lead with new CET requirement. This is a major change. We need to note. This is also basal. It is also going to be static from henceforth. ये जो न्यूज है, ये जो आर्टिकल है, ये करंट बैंकिंग तो है, बट अगले महीने के लिए ये आपका न्यूज मतलब स्टैटिक बन जाएगा. Domestic systemically important banks, RBI has reaffirmed SBI, HDFC and ICICI Bank. ये DCB में थे, DCB में है. DCB मतलब डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, मीन्स टू बिग टू फेल. ये बहुत बड़े बैंक हैं, ये फेल नहीं होंगे. ठीक है, तो अगर बड़े हैं, बड़ा होना भी एक अपने आप में गुनाह है. If you are big brother in your family or elder sister in your family, then you know that you always suffer. ठीक है, आपको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है, एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना पड़ता है. ठीक है कि नहीं है? व्हेन यू आर द एल्डर इन योर फैमिली, you have to do everything additional. You have to be extra cautious. You have to pay more money to your parents or to your family functions because you cannot charge it from your juniors. Okay, so similarly, banks like these three big banks has to give common equity tier 1, more additional common equity tier 1. ठीक है, तो नॉर्मली कॉमन इक्विटी टियर 1 का रिक्वायरमेंट कितना है? कॉमन इक्विटी टियर 1 का रिक्वायरमेंट कितना है? अदर बैंक के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? पहले अदर बैंक का जानेंगे तो इनका जानते हैं. 7% किसने कहा आपको? 4.5, 3.5. क्या बात है भाई, कहां से आ रहा है ये? कॉमन इक्विटी टियर 1 इंडिया में कितना चाहिए? एक तो है ग्लोबल स्टैंडर्ड. ओके, एक है ग्लोबल स्टैंडर्ड, एक है ग्लोबल स्टैंडर्ड, एक है इंडियन स्टैंडर्ड. ग्लोबल स्टैंडर्ड कितना मांगता है? Our special batches for Bank of Baroda's 2025 Specialist Officer is going to kickstart very soon. So don't waste your time. The course link and everything is available in the description. And as you all know that in last 1 year, there were multiple Bank of Baroda exams, and in all that 95% of selected students are directly from Knowledgist. Go and check out the success stories, and now time is to enjoy this sample session. Our classes is curated in such a way that even if you have a busy schedule, you can still grab it. Our live sessions are designed in the night and in the weekends. Also, if you miss them in 2 hours, the recording will be available. And in fast hand, we have a complete pre-recorded batch. And everything is going to start from 5th of January because you have a very less time to prepare for this exam. So do join and now enjoy the class. ग्लोबल स्टैंडर्ड आपका 4.5% मांगता है. इंडियन स्टैंडर्ड मांगता है आपको 5.5. नॉर्मल बैंक्स हैज टू हैव CET1 ऑफ 4.5.
but Indian banks should have 5.5. RBI needs additional extra. ठीक है, 5.5. This is for normal banks. As SBI, HDFC and ICICI are saying that we are big banks, तो ज्यादा पैसा दो भाई. अगर आप खुद को अमीर बताएंगे अपने दोस्तों में, तो दोस्त लोग क्या बोलेंगे, भाई तू ही अमीर है, तूने BMW खरीदा है, तू ही पार्टी दे. ठीक है, तूने फ्लैट खरीदा है, तूने गाड़ी खरीदा है, तेरा शादी हो रहा है, तू पार्टी दे. राइट. सो SBI हैज टू गिव एडिशनल 0.8, मतलब हैज टू मेंटेन, नॉट गिव, किसी को देना नहीं है. HDFC बैंक 0.4, ICICI बैंक 0.2. तो दैट मीन्स CET1 for SBI is 5.5 plus 0.8. ठीक है. हाँ, तो टोटल बेसल में रिक्वायरमेंट, CRAR का रिक्वायरमेंट SBI का 12.3 हो जाएगा, HDFC का 11.9 हो जाएगा. ठीक है, और ICICI का 11.7 हो जाएगा. CET1 में इतना ही बढ़ेगा. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट. Till March 31st, 2025, the CET1 surcharge for SBI and HDFC Bank will remain at 0.6 and 0.2 respectively. ठीक है, 31 मार्च तक सेम रहेगा. ये इम्पैक्ट ऑन लेंडिंग ये सब भूल जाइए. ठीक है, दीज आर टू बिग टू फेल. गॉट इट? प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन. ठीक है, मैं बता देता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ. इन यू ऑल नो बेसल नॉर्म्स. अगर बेसल नहीं देखा है तो जाके एप्लीकेशन में बेसल का क्लास देखिए, बहुत डिटेल में, बहुत लेमैन के लैंग्वेज में मैंने RWA, CET1, टीयर 2, ओके, कॉमन इक्विटी टीयर 1, एडिशनल 81, एडिशनल टीयर 1, टीयर 2, पूरा 11.5 का रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें हर एक बैंक को CET1 5.5 रखना होता है इंडिया में. ठीक है, 5.5% ऑफ देयर रिस्क वेटेड एसेट्स. बट ये 3 बैंक को हमने बड़े भाई का दर्जा दिया. वी हैव गिवन ऑल दीज 3 बैंक्स बिग ब्रदर स्टेटस. व्हेन यू आर बिग, you have to contribute more. So similarly, your SBI's common equity tier 1 requirement has increased to 6.3 from 5.5 requirement. Similarly, 5.9 for HDFC, 5.7 for ICICI. But for all other banks जो इतने बड़े नहीं हैं, उनके लिए 5.5. गॉट इट? सर ये बाउंस कर रहा है, क्या बाउंस कर रहा है, क्यों बाउंस कर रहा है? इंग्लिश ऑल्सो, हाँ इंग्लिश में बता देते हैं. Common equity tier 1 capital requirement for all other banks in India is 5.5. But these 3 banks are defined as DCBs, domestic systemically important banks. That means they are too big to fail. RBI tagged them for the customer's point of view. That it is, these 3 banks are big. If you keep money with them, these banks are safe. How banks are treated as safe banks? If their capital adequacy ratio is sufficient. So what is the capital adequacy ratio for banks? 11.5 in total. Out of 11.5%, 5.5 is common equity tier 1. 5.5. 1.5 is additional tier 1. Then 2% is there tier 2. Then 2.5% is capital conservation buffer. Total 11.5. But as these 3 banks are big, their common equity, CET मतलब common equity tier 1 capital requirement will be 0.8% extra for SBI, for HDFC 0.4%, and for ICICI Bank additional 0.2%. Got it or not? अब समझ में आया? रोशन सर now got it. Got it? दिस वॉज जस्ट ए सैम्पल सेशन. ये एक सैम्पल सेशन ही था, कंप्लीट सेशन. और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से. कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, ऑल्सो इन योर एप्लीकेशन एंड इन योर वेबसाइट. सो डोंट हेजिटेट टू ज्वाइन फ्रॉम देयर. थैंक यू.